स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फूरियर सीरीज़ विच इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल। तो ये जो पीरियोडिक सिग्नल का एनालिसिस होता है एक्चुअली डिटरमाइंस देयर एम्पलीट्यूड, उनका रिलेटिव फेज डिफरेंस, उनके हार्मोनिक्स विच आर नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, all analysis about that of the periodic signal that will do. Now this Fourier series is of can be represented in three ways. One is the trigonometric or the quadrature Fourier series, second is the polar form of Fourier series, and third is exponential Fourier series. तो ये तीनों सीरीज़ हम पढ़ेंगे. लेट अस सी व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज़. तो कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन फॉर एग्जांपल एक्स टी वी हैव टेकन, और एक्स टी को यदि हमको फूरियर सीरीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज़ में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वी कैन राइट दैट एक्स टी इज इक्वल टू, ऑन द स्क्रीन यू कैन सी एक्स टी इज इक्वल टू ए ज़ीरो, विच इज ए ज़ीरो इज़ नथिंग बट द डी सी कंपोनेंट, प्लस ए वन कॉस ओमेगा ज़ीरो टी, प्लस ए टू कॉस टू ओमेगा ज़ीरो टी, प्लस ए थ्री कॉस थ्री ओमेगा ज़ीरो टी, प्लस ए फोर कॉस फोर ओमेगा ज़ीरो टी, एंड सो ऑन, प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा ज़ीरो टी. जितनी एन के हार्मोनिक्स आप लेंगे उतने सारे ऐड करेंगे, प्लस बी वन साइन कंपोनेंट, पहले हमने लिया कॉस कंपोनेंट देन साइन कंपोनेंट, बी वन साइन ओमेगा ज़ीरो टी, प्लस बी टू साइन टू ओमेगा ज़ीरो टी, प्लस बी थ्री साइन थ्री ओमेगा ज़ीरो टी, प्लस बी फोर साइन थ्री ओमेगा ज़ीरो टी, अप टू बी एन साइन एन ओमेगा ज़ीरो टी. सो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ए ज़ीरो प्लस सिग्मा फ्रॉम एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा ज़ीरो टी, ये कॉस हार्मोनिक्स है, प्लस बी एन साइन एन ओमेगा ज़ीरो टी, वेयर t lies between t0 to t0 plus capital T, where t is nothing but the time period which is represented as 2 pi by omega 0, and a n and b n are the coefficients. Now omega 0 is the fundamental frequency. 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0, etc. They are up to n omega 0 are known as the harmonics of omega 0. नाउ दिस इज़ द इक्वेशन. ये जो आपने इक्वेशन देखी अभी, इक्वेशन ये वाली जो, दिस इक्वेशन इज़ नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज इक्वेशन. देन we will see the components, different components like a0, how a0 can be determined. This is, as I told you, it has a0 is constant and it does not depend upon the n. It is expressed as, this is a DC component, so it is expressed as a0 is equal to 1 by t integration t0 to t0 plus t x t dt. सो a0 जैसे मैंने आपको बोला था DC कंपोनेंट है, या एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स टी ओवर टाइम पीरियड t0 टू t0 प्लस टी फॉर वन cycle, that is for one cycle, because we have taken xt as periodic signal. So for one cycle we will find out average value, then it is the average DC component. Now second component is an, this is also constant, it is given by 2 by t integration t0 to t0 plus t xt cos n omega 0 t dt. It is also written as, we can remove small t0, instead of that we can write limit 0 to t xt cos n omega 0 t dt. Both are the same thing. Now for the constant bn is equal to 2 by t integration t0 to t0 plus t xt sin n omega 0 t dt. This will be giving you the bn components. All this only we have represented. So bn equivalently can be written as, it can be written as 2 by t integration 0 to t xt sin n omega 0 t. So in short we can write, for the infinite time period
an is equal to 2 by t, t0 to t0 plus t xt cos n omega 0 t, which is equal to 2 by t 0 to t integration xt cos n omega 0 t dt, and bn can be written as 2 by t 0 to t xt sin n omega 0 t dt. Now there can be some symmetric conditions which we should think about before Fourier series analysis. Now जब भी अब हमको पता है कोई even function होता है, then x of t is equal to x of minus t. So cos t, t square, t sin t are examples of even signals. This is the even signals are shown in the diagram where the signals are symmetric about the y-axis, that is known as the even signal, and the odd signals, they are symmetric in quadrant number 1 and quadrant number 3, like this. Quadrant number 1 and quadrant number 3. In this diagram, quadrant number 1 and this is quadrant number 3. So now you know what is even signal, what is odd signal. So if xt is even, then there will be symmetry about the y-axis, and therefore integration of minus a to a xt can be treated as 2 integration 0 to a xt dt. It means this part is equal to this part. क्वाड्रेंट 1 में जो सिग्नल रिप्रेजेंटेड है दैट इज इक्विवेलेंट टू सिग्नल रिप्रेजेंटेड इन द क्वाड्रेंट 2. Therefore we can say that the signal is double of the signal which is shown in the quadrant 1, or signal is double of the signal which is shown in the quadrant 2. तो लिमिट हमने क्या किया, माइनस ए टू प्लस ए हटा के 0 टू ए कर दिया और सिग्नल को 2 से मल्टीप्लाई किया. दैट्स व्हाट वी हैव डन फॉर द सिमेट्री पर्पस. इन द फंक्शन now when the sum or product of two or more even signals we have taken, obviously the resultant function will be an even function, and the sum of two or more odd function is an odd function, and product of two odd function or the multiplication of the two odd functions will be an even function. Now consider if xt is odd, it means then x of minus t will be equal to minus of xt. Therefore the examples are sin t, t cube or t cos t. These are examples of odd functions, and they are symmetrical. Odd functions are, as we know, symmetrical in the first quadrant and third quadrant. Therefore they are equal and opposite. So whenever we add this function, the average value of odd function is equal to 0. Therefore integration from minus a to plus a xt dt is equal to 0. Now we have seen the two forms